वीवर्स, आज मैं आपको यूके में स्कॉटलैंड की सबसे खूबसूरत झील की सैर कराता हूँ। इसका नाम है लॉच लोमोंड लेक। ये एक तारीखी और बहुत खूबसूरत झील है। लॉच लोमोंड झील 36 किलोमीटर लंबी, 8 किलोमीटर चौड़ी और 0.2 किलोमीटर गहरी है। इसकी सतह का रकबा 71 किलोमीटर है। ग्लेशियर के जरिए जिस बेसिन में ये वाक़ है, ये तकरीबन 10,000 बरस कबल आइस एज के इख्ताम पर बनी थी। इसको रिबन झील कहा जाता था। लॉच लोमोंड स्कॉटलैंड के पहाड़ों और नशेबी इलाकों के दरमियान मीठे पानी की एक स्कॉटिश झील है। इसके जनूब में ग्लासगो और स्टर्लिंग जैसे मशहूर शहर हैं। वीवर्स, हम लेक पर पहुंच चुके हैं। इस लेक को अच्छी तरह विजिट करने के लिए हम यहाँ से क्रूज पर ट्रैवल करेंगे। चलो वीवर्स, चलते हैं क्रूज पर। ट्रैवल के साथ साथ मैं आपको इस लेक और इसके राउंड बोट में हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में डिटेल से आगाह करूंगा। Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome aboard the Estina. Before we go into Loch Lomond, we would like to make you aware of some of the following safety regulations. In the unlikely event of an emergency, a member of our crew will inform you. And could you please make your way to the nearest exits at the open sides of the boat. We have life rafts and buoyancy aids on board the vessel, capable of supporting 100 people. Please note, in the interest of safety, there is no smoking or vaping permitted during this cruise. During the cruise, at all times throughout the cruise, and to refrain from running on the decks and stairs while the boat is in motion. The bar downstairs will shortly be opened for the sale of beers, spirits and soft drinks, with tea and coffee also available. The toilets are located on the bottom deck to the rear of the vessel. Thank you for listening. Enjoy your cruise.
लॉच लोमोंड लेक के शिमाल में स्कॉटिश हाईलैंड है। आज हम आपके साथ लॉच लोमोंड के कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ शेयर करना चाहते हैं। यहाँ मुख्तलिफ नजरियात मौजूद हैं कि लॉच लोमोंड का नाम कहाँ से आया। लोक का मतलब झील है। कुछ लोगों का ख्याल है कि लोमोंड का लफ्ज़ गैलिक लिमान से आया है, जिसका मतलब एलम है, और इसे एलम्स की झील बताते हैं। जबकि दूसरों को शुबा है कि लोमोंड की पैदाइश लाम से हुई है, जिसका मतलब बेकन है। नज़दीकी पहाड़ी बेन लोमोंड को बेकन हिल कहते हैं। सबसे पहले 1841 में शाये होने वाले गाने लॉच लोमोंड के बोनी बैंक के जरिए लॉच लोमोंड को मशहूर किया गया था। बहुत से लोग इसे एक रोमानवी गाना समझते हैं, लेकिन दोनों दरहकीकत 1745 के जैकबाइट राइजिंग के से मुतल्लिक है, जो बरतानवी हुकूमत के खिलाफ खूनी बगावतों का एक सिलसिला था। लॉच लोमोंड बरतानिया में सतह के लिहाज से सबसे बड़ी झील है और लोख नीस के बाद बरतानिया में हुजम के लिहाज से दूसरी बड़ी झील है। दर हकीकत लॉच लोमोंड और लोख नीस लोखस इव और मोराल और शील के साथ मिलकर स्कॉटलैंड में झीलों के पानी का एक तिहाई हिस्सा बनती है। इसमें मगरमच्छ की तरह के मिलते जुलते मोस्टर जानवरों को कई मौक़ों पर देखा गया है। ये झील हाईलैंड बाउंड्री फोर्ट की वजह से बनी है, जो ज़मीन की तहों में होने वाली टूट फूट से बनी है, जो स्कॉटलैंड में दो बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के इलाकों को अलग करती है। शिमाल में हाईलैंड्स और जनूब में लोलैंड्स है। ये एक बहुत बड़ी साइंसी दिलचस्पी का मकाम है, जिसका मुताला पूरी दुनिया के माहिर अर्ज़ियात ने किया है। इसके पानी में 22 बड़े जजीरे और 27 छोटे जजीरे शामिल हैं। Welcome to Loch Lomond, known as the Queen of Scottish Lochs. It's the largest expanse of fresh water in Great Britain, 23 miles long, 5 miles wide, and at the northern end, 636 feet deep, making it the third deepest in Scotland. The River Leven, which we're now leaving, is the loch's only outlet, running from here into the River Clyde and from there into the Atlantic Ocean. The area is home to an abundance of wildlife, and its history is as rich as the landscape that surrounds these mysterious waters. It's a place where kings have trod and outlaws have roamed. It has inspired writers, musicians and artists for generations. It was during the Victorian era that Loch Lomond gained renown. Visitors were drawn from across the world, thanks in large part to the romantic novels of the likes of Tobias Smollett and Sir Walter Scott. Day trippers would travel here by train from Glasgow to cruise aboard large paddle steamers like the one we're passing on the left. This is the Maid of the Loch, the very last paddle steamer to be built in Britain. She was built in 1953 on the River Clyde in Glasgow, which was, between the late 19th century and the early 1950s, the world's premier shipbuilding city. She represents those bygone days when she and many ships like her would sail the length of the loch filled with visitors. These ships also provided a valuable mail and transportation service to the local communities. As with many steam-powered vehicles, mounting maintenance and running costs saw the ship retire in 1981. She now stands as a monument to both Glasgow shipbuilding and Loch Lomond's steam-powered pass. इनमें से बेशतर के नाम इंच हैं, जिसका मतलब जजीरा है। बहुत से जजीरों की अपने हकायक और कहानियां हैं। इसके चारों तरफ तिलस्माती पहाड़ और मनरोस हैं, जिनमें से सबसे मशहूर बेन लोमोंड है, जिसकी बुलंदी 974 मीटर है। ये स्कॉटलैंड की एक पॉपुलर क्लाइंब में से एक है, जहां हर साल 30,000 से ज्यादा अफराद सरबराही इजलास में पहुंचते हैं। लॉच लोमोंड आज तक सियाहों में बेहद मकबूल है। एडनबर्ग, ग्लासगो और स्टर्लिंग जैसे बड़े शहरों से पहुंचना आसान है। एक तारीखी, हैरतअंगेज मनाजर, वाइल्ड लाइफ और नेचर के साथ इसमें हर वो चीज मौजूद है जिसकी आपको खुसूसी तौर पर हॉलीडेज के लिए जरूरत है। लॉच लोमोंड के इर्द गिर्द सैर करने के लिए बहुत से मकामात सरफरिस्त और तवज्जो के मरकज हैं। बरतानिया की सबसे बड़ी झील लॉच लोमोंड ग्लासगो के शिमाल मगरब में सिर्फ एक मुख्तसर फासले पर है। मशहूर मुसन्निफ वाल्टर स्कॉट ने इसे स्कॉटिश लेक्स की मलका कहा है। इस खूबसूरत झील में बहुत मजेदार ट्राउट, सालमन और व्हाइट फिश पाई जाती है। ये डे ट्रिप्स, वाटर स्पोर्ट्स के शौकीन, पैदल सफर, बाइक चलाने वालों के साथ साथ
हैरत अंगेज मनाजर को ड्रा करने वालों में बहुत मशहूर है। जहाँ सैर करने वाली दीगर मशहूर चीजों में लोक के चारों तरफ कश्ती का सफर करना या इस लंबे ट्रोस्टिस पर इस नज़ारे के साथ बेन लोमंड का तवील सफर करना शामिल है। वाइल्ड लाइफ में दिलचस्पी रखने वाले अफराद को पार्क के अंदर वाक़ बर्ड ऑफ प्रे भी जाना चाहिए। लोच लोमंड एक खूबसूरत पहला स्टॉप है जो ग्लासगो से वेस्टर्न हाईलैंड्स बे के खूबसूरत रिगल दही इलाकों के जरिए फोर्ट विलियम तक जाता है। झील के जनूबी किनारे पर वाक़ कैमरॉन हाउस है, एक स्कॉटिश किले के रोमान का लुत्फ उठाने, लेकसाइड फज़ा में सांस लेने और गोल्फ समेत बैरूनी सरगर्मियों से लुत्फानंदोज होने के लिए एक बेहतरीन जगह है। इस इलाके के इर्द गिर्द 7 गोल्फ कोर्स मौजूद हैं। कैमरॉन हाउस जो स्कॉटलैंड के इलाके बॉल के करीब लोच लोमंड पर वाक़ है, पहली बार 1700 के वस्त में तमीर किया गया था। Cameron House was built in the 18th century by the Smollett family, shipbuilders and merchants, whose most famous member was the poet and novelist Tobias Smollett. Such was the wealth and influence of the Smollets. The house has welcomed a few famous guests in its time. Former Prime Ministers Winston Churchill and Anthony Eden, as well as Empress Eugenie of France, have all visited here. As was the case with many ancestral homes across Britain, the costs of upkeep, staff and servants became unsustainable for the family. It was sold in 1986 and, after extensive additions to the original building, Cameron House was converted into a luxury 5-star hotel. Nowadays, famous faces walking through the old corridors belong to pop stars or football players. The late Michael Jackson once described the hotel and Loch Lomond as one of his favourite places to visit. Unfortunately, due to a fire in the main building in December 2017, Cameron House has been closed while major refurbishments take place. It is hoped that the hotel will be fully operational again in the near future. और बाद में सर जेम्स स्मोलेट ने इसे खरीदा था और मॉडर्न फार्नस्टोन के जरिए किले को 1830 में विलियम स्पेनिस ने दोबारा तमीर किया। अपनी 300 साल तारीख में कैमरॉन हाउस ने सियासी और अदबी मनाज की कई शख्सियात की मेजबानी की है। The large house on the hill to the left that you may be able to spot between the trees is Auchendennen House. Auchendennen House was commissioned in 1860 by the Glasgow-based tobacco merchant George Martin and was designed by famed Scottish architect John Burnett. During the Second World War, the house was used as a convalescent home for American servicemen coming from the front in France. After the war, as a goodwill gesture, the house was converted into a youth hostel thanks to a generous donation from American trade unions. The house remained a youth hostel until 2012 when it was bought over and converted into a 27-bedroom private home once again. Legend has it the house marks the site of the hunting lodge of King Robert the Bruce, who owned much of the land and islands of Loch Lomond. These he used as his private hunting estate, introducing many of the deer and game birds to the islands and surrounding area. कैमरॉन हाउस को 1986 में एक पुरतशीश होटल और रिजॉर्ट में तब्दील कर दिया गया जब इसे स्मोलेट खानदान ने फरोख्त किया, जिसकी इस प्रॉपर्टी पर 3 सदियों तक मलकियत। इसकी फरोख्त और होटल में तब्दील करने के बाद कैमरॉन हाउस मशहूर शख्सियात के लिए एक अमाजगाह के तौर पर जाना जाता है, जिसमें बरतानिया में अमीर और मशहूर लोगों के लिए शादी के सबसे मशहूर मकामात से एक। जिन मशहूर शख्सियात की इसमें शादी हुई इनमें शॉन कॉनरी, रॉबी विलियम्स, कैमरॉन डियाज, अन्ना फरेल और जो डाला शामिल हैं। ज्यादातर हॉलीवुड और बॉलीवुड और दीगर मशहूर शख्सियात कैमरॉन हाउस में मुकीम थी। माइकल जैक्सन जनवरी 1997 में स्कॉटलैंड चला गया। वो अपने खानदान के लिए हाईलैंड का किला खरीदना चाहता था जो लोच लोमंड के कैमरॉन हाउस में ठहरे। कैमरॉन हाउस एक 5-स्टार लग्जरी स्पा होटल रिसोर्ट है जिसमें 136 गेस्ट बेडरूम, अवार्ड याफ्ता स्पा और चैंपियनशिप लेवल गोल्फ कोर्स हैं। कैमरॉन हाउस स्कॉटलैंड में अमीरजादे अमीरजादियां लग्जरी रहायशगाह में ऐशो आराम और अय्याशी की जिंदगी गुजारते हैं। लोच लोमंड के मुतअद्दिद जजीरों में से सबसे बड़ा और बरतानिया का सबसे बड़ा ताज़ा पानी का जजीरा इंचोरियन एक बार 7वीं सदी की खानकाह और स्नेपल मेरन के लिए वक्फ चैपल का घर था। यहीं पर आपको 8वीं सदी के लेनो कैसल के खंडात भी मिलेंगे जो किंग रॉबर्ट अव्वल की शिकारगाह के तौर पर मशहूर था और बाद में लेजेंडरी रोब राय ने लूट लिया था। यह जजीरा इस जगह के तौर पर भी मशहूर है जहां 1984 में पहला हॉक्स होर्लिंग आलमी रिकॉर्ड कैंप किया गया था। अगरचे ये निजी मलकियत का है,
लेकिन ये सियाहों के लिए सेल्फ कैटरिंग कॉटेज रेस्टोरेंट्स के लिए मकबूल है। बरतानिया का चौथा सबसे बड़ा नेशनल पार्क लॉच लोमोंड एंड द ट्रोसस नेशनल पार्क लॉच लोमोंड के मरकज में 720 मुरबा मील के रकबे पर मुहित है। इसमें मुतअद्दिद पहाड़ी सिलसिले भी शामिल हैं, जिनमें मेनरोज और बेन लोमोंड के अलावा कार्बेट की चोटियां भी शामिल हैं। ये इलाका आउटडोर सरगर्मियों के लिए इंतहाई मकबूल है, जो यहाँ फिशिंग, हाइकिंग, बाइकिंग, क्लाइंबिंग, बोटिंग, कैनोइंग और केकिंग के अलावा कैंपिंग जैसी कामों के लिए तैयार किया गया। Before the Industrial Revolution of the 1800s, the meeting of these two contrasting landscapes was reflected in the meeting of two contrasting cultures,
the hardier, more traditional Highland clans, and the increasingly civilised and cultured lowlanders. This melting pot situation often led to disagreements and conflict. Not far from here, just behind the hills to our left, lies Glen Fruin, or the Glen of Sorrow. Glen Fruin is the site of one of the most gruesome battles in Scotland's history. In 1603, a dispute between two rival clans, Colquhoun and MacGregor, culminated in the two meeting for a pitched battle in the glen. Despite being outnumbered 2-1, the MacGregors managed to flank the Colquhoun forces, and what began as a battle became a massacre. Legend has it that for the 200 to 300 casualties that Colquhoun suffered, the MacGregors' casualties were but a handful. Some reports suggest that even the Colquhoun women who were there to tend the injured were massacred along with their kinsmen. Such was the viciousness of the MacGregor onslaught that King James IV had their clan chiefs executed and decreed that the MacGregor name was to be abolished on pain of death, a judgment that would not be lifted until 1775, 172 years later.
Scotland and the British Isles were formed 500 million years ago, it may surprise you to know that Loch Lomond only dates back 12,000 years to the end of the last ice age. As the ice that covered Scotland began to melt and recede, it gouged a deep canyon into the land. In its early years, Loch Lomond was connected to the sea before the land at its southern end rose up, trapping the water, which is now replenished by the burns and rivers of the surrounding hills and mountains. The loch's catchment area for rainfall is 270 square kilometres, and its water level can fluctuate by as much as 3 metres between seasons. The loch and its shores are home to a variety of mammals, including wildcats, deer and goats, as well as around 200 species of birds that inhabit or visit the loch side. The most renowned of these being golden eagles, falcons and ospreys. The loch itself is also home to around 14 species of fish, the most prominent being salmon and sea trout. There is also a rare type of freshwater herring called powan, which can only be found in 3 other lochs in Scotland. The shoreline heading north on our left-hand side for the next 3 miles is home to 2 world-famous championship golf courses. The first is the Carrick, opened in 2006 and designed by the famed Canadian golf course architect Doug Carrick. The second, and most famous, is the Loch Lomond golf course, designed by the American golfer Tom Weiskopf. Golf magazine ranks the course in the top 50 in the world, and it has hosted various competitions over the years, including the Scottish Open and the Solheim Cup. Membership fees are in the region of £100,000, and it's easy to understand why. Membership is by invitation only, and famous members include Prince Andrew and Sir Sean Connery. The course record of 62 is held by South African golfer Retief Goosen. Over the centuries, the islands have become home to what was to be kept safe or secret.
monasteries, castles, and even on a number of islands, illicit whisky stills. The largest of these islands we are passing on our left. This is Inchmurren. Inchmurren is 1.5 miles long by half a mile wide and is the largest inland island in Great Britain. The island has been inhabited since the 6th century when the monks of St Mirren set up a monastery here. Between the trees on the bank you may be able to spot the ruined remains of Lennox Castle. This castle was built by Duncan, the 8th Earl of Lennox, in 1394. The castle was, for a short time, during the latter years of its existence, the residence of Mary Queen of Scots. Much later, another famous visitor to the island was legendary Scottish outlaw Roy MacGregor, who led a night raid on the island, which was by this time a base for government forces. He and his clansmen relieved the island of its cattle, as well as all the island's boats, to prevent pursuit. Today the island is privately owned by the Scott family. It has a small farm, hotel and restaurant, and also houses Scotland's oldest, and quite possibly bravest, naturists club. हाइक द वेस्ट हाईलैंड वे स्कॉटलैंड के सबसे मशहूर पैदल सफर करने वाले के रास्तों में से एक है और ये माउंटेन बाइकर्स में तेजी से मकबूल होता जा रहा है। 96 मील तवील वेस्ट हाईलैंड वे में सालाना 1 लाख पैदल चलने वालों के लिए बड़ी अट्रैक्शन रखता है। बरतानिया के सबसे ऊंचे पहाड़ बेन न्यूज जो 4406 फुट ऊंचा है इसके रास्ते में आता है। ग्लासगो के करीब मलगाई से फोर्ट विलियम तक जाता है। सफर के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर मुतअद्दिद कैंपसाइट्स और रहायश के लिए बेहतरीन कॉटेजेस हैं, क्योंकि पूरी ट्रेलिंग करने वालों के लिए 5 या इससे ज्यादा दिन लग सकते हैं।
faithfully chose as their base. All who lived in the area did so under the protection of the Earl. This included two of the most famous names in Scottish history. During the Scottish Wars of Independence, both William Wallace and Robert Bruce were separately given permission by Malcolm, 5th Earl of Lennox, to use Loch Lomond site as a hold and hiding place during this violent period of Scotland's history. William Wallace's presence in the area is evidenced in Wallace's Isle at the north end of Loch Lomond, where, legend has it, he once took refuge. Robert de Bruce relied heavily upon the Lennox family and their forces during his campaign to become King of Scots. He commended the men of Lennox for their bravery during the Battle of Bannockburn, at which he finally took the throne in 1314. In his latter years as king, it is known he and the Earl hunted together in the surrounding countryside and on the islands. तो व्यूवर्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं इस तरह के मजीद वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूंगा। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब और लाइक करने से आपका कोई नुकसान नहीं होता, बस हमें इससे मजीद वीडियोस बनाने के लिए अप्रिसिएशन मिलती है। तो व्यूवर्स, मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।